सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। वित्त, शिक्षा, खनन और जल संरक्षण के क्षेत्रों में भी समझौते होने की संभावना है। श्री अबॉट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों से उस वीडियो की प्रामाणिकता की सच्चाई का पता लगाने को कहा है जिसमें अल-कायदा प्रमुख एमन अल-जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने आतंकी संगठन की शाखा खोलने की घोषणा की है। मंत्रालय ने सभी राज्यों से भी अत्यधिक सतर्क रहने को कहा है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। उन्होंने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है और अभी इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस महान शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को तुलनात्मक धर्म और दर्शन का महान विद्वान माना जाता है। राष्ट्रपति आज इस अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विद्यार्थियों के साथ बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम देश भर में दोपहर बाद 2:55 से आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों से प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अध्यापन सिर्फ एक पेशा ही नहीं है बल्कि मार्गदर्शन और ज्ञान के प्रसार की नैतिक जिम्मेदारी भी है। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षकों को अपने ईमेल संदेश में श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता रहा है और एक बार फिर शिक्षकों को उसी तरह का सम्मान देते हुए वैसा ही दर्जा दोबारा हासिल करना चाहिए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। भारत इस श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त ले चुका है। आज का मैच जीतकर भारत 4-0 से श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दोपहर 2:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मार्टिना हिंगिस और इटली की उनकी जोड़ीदार एरिया पेनेटा अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। इस जोड़ी ने भारत की सानिया मिर्जा और जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Sanjay Mattu. Torrential rain in the entire Jammu and Kashmir state for the last 4 days has claimed a large number of human lives and disrupted normal life across the state, with vast areas and localities submerged in flood water. The toll in the incessant rain and flash floods in the state has risen to 20, even as 50 others were feared dead after a bus carrying them was washed away in Rajouri district yesterday. According to official sources, there's still no trace of the bus or the passengers who were on board the bus. The flood protection work carried out by Public Health Engineering, PHE Irrigation and Flood Control Department has been damaged, and some of the vital bridges have also been washed away in the flash floods in many parts of the Kashmir Valley, including Rajouri and Poonch, thereby disrupting road traffic. Chief Minister Omar Abdullah late last night reviewed the flood situation in the state and directed the District Development Commissioners and Divisional Commissioners to give top priority to safeguarding human lives in the current crisis. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has expressed condolence over the loss of lives in the Jammu and Kashmir floods and sanctioned 2 lakh rupees for the kin of the deceased and 50,000 rupees for the seriously injured. Central Bureau of Investigation or CBI Director Ranjit Sinha has said that he will recuse himself from the ongoing probe in the gold scam if the Supreme Court so orders. Sinha's statement came amid the controversy over his alleged meetings with officials of companies accused in the 2G scam. Terming the controversy as deliberate character assassination, Sinha claimed that he has not favoured anyone and the courts are there to scrutinize every paper and aspect of investigations being carried out by the agency. Meanwhile, Ranjit Sinha has decided to file a perjury case against the NGO, which has sought his removal from the coal scam probe for malicious and false statements made before the Supreme Court. Earlier yesterday, the Apex Court rejected the CBI Director's plea to restrain the media from examining the visitors' register at his official residence.
The Home Ministry has asked intelligence agencies to verify the authenticity of the video showing Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri announcing the formation of the terrorist group's wing in the Indian subcontinent. The ministry also asked states to be on high alert. Meanwhile, yesterday, Home Minister Rajnath Singh briefed Prime Minister Narendra Modi on the matter. He said the video is being verified and its authenticity is not yet confirmed. In a 55-minute video posted online, Zawahiri said the new branch, Qaidat al-Jihad, will take the fight to India, Myanmar and Bangladesh. The Al-Qaeda is active in Afghanistan and Pakistan, where its surviving leadership are thought to be hiding. The Supreme Court has approved the decision of the UP government to declare Urdu the second official language in Uttar Pradesh. It said that language laws of the country are not rigid, but accommodative. A 5-judge bench headed by Chief Justice R.M. Lodha ruled yesterday that nothing in the Constitution bars the state government from declaring one or more languages used in the state, in addition to Hindi, as the second official language. It upheld the Uttar Pradesh Official Language Amendment Act 1989, by which Urdu was adopted as the second official language of the state. The Supreme Court passed the order on an appeal filed by the UP Hindi Sahitya Sammelan, challenging the constitutional validity of the Official Language Amendment Act 1989, by which Urdu was recognized as the second official language of the state. Today is Teachers' Day. This day marks the birth anniversary of the great scholar and statesman Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. Dr. Radhakrishnan, who served as the second president and the first vice president of India, was an authority on comparative religion and philosophy. Our correspondent reports President Pranab Mukherjee on the occasion will present national awards to teachers for the year 2013 to recognize their contribution in nation building. Prime Minister Narendra Modi will address nearly 1,000 school children at the Manekshaw Auditorium in New Delhi this evening. Students from select states will also get a chance to participate in his address through video conferencing. The Indo-Zimbabwean pair of Sania Mirza and Cara Black could not make it to the women's doubles finals of the US Open. Martina Hingis and her Italian partner Flavia Pennetta defeated the Indo